Hello everyone. Hello, hello. Hello, hello, hello everyone. Just a minute. ଟିକେ link share ହେଇନି. Good evening, good evening. Start କରିବା. କହୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଏଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା? ହେଲା सो ऑलरेडी आपण माने जानी चंती द्रोण 1.0 बैच हमर आसी जाई छी जोथरे कि आर्ट्स रो एसएसबी टीजीटी कंप्लीट हो छी एंड टीजीटी बैच पई हमर कोन पीसीएम भी अछि सीबीजेड भी अछि प्राइस ओनली 1500 रे 1 ईयर पई आपण सब्सक्रिप्शन नै परिबे 1 ईयर भीतर जेते भी एग्जामिनेशन आसीला या अंडर रे ही रहिबो इज दैट क्लियर बॉटनी पई रेडी ओके स्टार्ट हो रुआ तम माने सिना स्टार्ट कर दो छ के स्टार्ट टाइम लागियो ना तो देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि को मते बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय बैक्टीरिया को हमें नेकेड आई रे देखि परिबा बैक्टीरिया को हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे देखुचे हैंड लेंस रे देखुचे या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे देखुचे सो दीटा को एलिमिनेट करि दियो तो दीटा ऑप्शन रही छि ता भितर गोटे हबो राइट आंसर कोटा हबो मते को व्हाट विल बी द राइट आंसर दियो दियो राइट आंसर दियो कौन हबो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जीवनी बिकॉज देखो हम बटी पढुचे तो बेसिकली आपण माने को माइंड एटा आसी जिबा कथा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपण माने जेन्युइनली केमिस्ट्री या फिजिक्स को रिलेट करिवे सीबीजेड को सॉरी पीसीएम को पळेबे हैला सीबीजेड रे पढला बेले आपण माने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को चूज करिवे ठीक अछि कहा को कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आपण चूज करि परिबे जोटा कि केते ना बिलो द कोन लाइक हमर अनएडेड आई के हम कहि परिबा अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रो मिली तार थाए साइज जो थरे के हम कोन कहि पाछे दैट कैन बी सीन बैक्टीरियल कॉलोनीज दैट इज मासली से माने रही थांती ऑन द अगर प्लेट्स विथ कोन नेकेड आई रे हम देखि परिबा जदी 200 हमर माइक्रो मिली रु अधिक हैला 200 माइक्रो मिली या फिर ताठू कम हैला हम कोन कंपाउंड माइक्रोस्कोप दरकार चला नेक्स्ट Next, in the life cycle of a virulent bacteriophage, the period of production of new phase particles is called. New phase particles is called what? Right answer. कौन हबो मते को? ना वेजिटेटिव फेज हबनी वेजिटेटिव फेज हबो नाही
तेबेले ग्रोथ माइक्रोब्स ग्रोथ हैला तार प्लांट साइकिल को नेकी लाइफ साइकिल को नेकी हम करबा दैट इज द वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड हबो एठी कोन हबो क्वेश्चन अछि लाइफ साइकिल ऑफ ए कोन वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन टाइम रे जेते पचाछि सेटा को अपन लैटेंट पीरियड फेज बोली चूज करिवे दैट इज द लैटेंट पीरियड फेज इज दैट क्लियर okay what now that is the latent period phase okay so this is what the latent period phase am taku kahiba is that clear very good chalo yes that ame kahi pariba the kono the classical phase of the biology am jodi consider karuche the latent period is the time between the kono na absorption penetration and the release of the progeny phase कोना absorption हैला penetration हैला release करिबा progeny phase रे हमें relate करि परिबा का गुना latent period बोली ताको कहउचे that is during very हमें कहि परिबा much of this time the phase components are being synthesized and assembled जोटा कि sometimes हमें कहि परिबा shutter eclipse भी हे थाए okay that periodically refers to the specifically हमें कहि परिबा when no competitive variants are कोना डिटेक्टेबल किछि डिटेक्ट हेई परिबनी इन दैट कंडीशन हमें कहि परछे कोन ना हमर लैटेंट पीरियड फेज बोली कहछ क्लियर वेजिटेटिव फेज हेले हमें कहि परिबा दैट नॉट यूज इन द फेज ऑफ लाइफ साइकिल नोमेनक्लेचर रे होउनी बट रेफर हमें करि परिबा काहा को ना ग्रोथ इन द माइक्रोब्स प्लांट लाइफ ए भीतर हमें ताको कोन डियर एडमिन प्लीज शेयर द सेशन तो क्लास शेयर करी कि ही क्लास स्टार्ट कली कोन हैला तमर पुनी सीबी साइड रे पिला ही नाहंती कोन करिवा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो in which kind of xylem parenchyma the parenchyma cell occur singly among the fibers and the tracheids what will be the right answer पिला रहिबा दरकार ना सीबीजेड रे पिला थिले तो क्लास को आसीबे अदरवाइज बॉटनी कहार दरकार संस्कृत क्लास होबनी तेलुगु क्लास हो करिवो तम माने मु कर देबी तेलुगु क्लास मु तमनकर पढाई परिबी इवन बेंगली क्लास भी करि परिबी को राइट हियर नंबर 3 what will be the right answer tell me yes that is what diffuse diffuse the apotracheal type what diffuse the apotracheal type को हमें कहिबा माला मते आसीनी हम काई अजथारे आसीनी मानि जेबी ना ओडा आसीची कहिबी so boundary the apotracheal type is not the parenchyma calls located along the boundary of the xylem region कोठी आसीबो ना हमर xylem region को पळे आसीबो क्लियर वेरी गुड चलो एंड टर्मिनल कथा आसिले लोकेटेड नियर द कोन वेसल रो एंड वेसल्स रो एंड रे हमें पाई परिबा चलो तो टोटल जाइलेम रे आपण माने देखिबे ट्रैकेट्स अछि वेसल्स अछि जाइलेम पैरेन्काइमा जाइलेम फाइब्रोस टोटल 4 टाइप रो अछि क्लियर चलो epiphytes are plants which depend on other plants for epiphytes are plants which depend on other plants for what for food for mechanical support for shade or for water or for what now water what will be the right answer tell me that is for the mechanical support very good that is for what na for the support for the mechanical support hame kahuche because epiphytes कोथरे हमें कहउचे ना orchids हैला कोडा हैला ना orchids हैला ओके देन हमें कहि परिबा ब्रोमेलियड हमर कोन ब्रोमेलियड्स हैला
ब्रोमेलियाड्स हैला फॉन्स सम फॉन्स आल्सो ओके एमान को हमें कंसीडर करि पारुछे लाइफ जो माने लाइफ करंती ऑन अदर प्लांट्स प्योरली फॉर द फिजिकल सपोर्ट लाइक टू रीच द लाइट हैला एयर हैला से माने को रीच करिबा लागि से माने को हमें राइट आंसर चूज चलो मजा मस्ती रे कर क्लास आ कोन त माने कहिबे so part of the vascular stand of the leaf which is present in the stern as a lower portion of the vascular supply to the leaf is called what कौन कहला कौन क्वेश्चन कहला आउथरे बुझ टिके ना पार्ट ऑफ द vascular stand vascular plant कोरा नॉन vascular plant कोरा कहिछि vascular कहले हमें कोन कहबा ना जोथरे मैम जाइलेम एंड फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट अछि ताको हमें कहछे vascular जोटी जाइलेम फ्लोएम एब्सेंट अछि ताको हमें कहछे नॉन vascular सिंपल तो ताको हमें कोन कहि परिबा ना vascular is applied to the leaf is called what leaf cap leaf trace branch cap or branch trace trace और gap भीतर ही क्वेश्चन आंसर so what will be the right answer tell me that is what that is the leaf what trace yes that is what that is the leaf trace will be the right answer leaf cap कोटा रहिबो leaf gap ताहले कोटा को मते that this is a gap in the vascular cylindrical कोन हमें कहि परिबा vascular cylindrical of the stem immediately above where a leaf trace कोन हमर डिपार्ट हुई जोठु डिपार्ट हुए सेते बेले तले vascular trace हमर बाहरी जाए हमें सही कंडीशन टा कोन कहि परिबा ना डिपार्ट होथिबारु that is the condition it's a space not the कोन strand itself but जते leaf trace कथा पचरिला हमें कोन कहउचे ना vascular bundle that leaves the stems and enter the leaf हमें सेटा कोन कहउचे ना leaf trace बोली कहउचे branch gap is different जदि leaf रहला leaf रो gap leaf रो trace चैनल सेम हमर branch रो जोटी गछर पार्ट जदि हमें कहिबा ओके तार जतेले branch हे कि थाए ना सो जोटी branch ता स्टार्ट हुई तार ए स्टार्टिंग पॉइंट रो हमर कोन गैप बाहरे एंड स्टार्टिंग रो ही लेस बाहरे तो ट्रेसेस गैप हमें सेटू स्टार्ट करी पारे चलो नेक्स्ट so this is the leaf आपण माने देखुसंदी तार प्लेट ए जोठी स्टार्ट लागी छी ए टू स्टार्ट हुए this is the position जोठा में कहउचे gap and traces clear very good चलो which one of the following statements is not correct कोटा not correct पचारि छी okay tell me the right answer कोटा हबो eliminate करि चला मते को all echinoderms are viviparous what will be the right answer all echinophorus are viviparous is that right right ma'am all echinoderms are viviparous that is right no ma'am that is wrong that is the wrong because we can say all echinoderms are the are viviparous that is wrong why wrong because amara echinoderms जोडा रही छि मैं कहा को नहीं परिबा starfish is the echinoderms sea urchins are the echinoderms so हमें कहि परिबा this is mostly oviparous okay तो याको एलिमिनेट कर देले बाकी तीनटा ऑप्शन तो राइट ही अछि ऑब्वियसली थिबो कारण गोटे ही एलिमिनेट करिया को देछि ओके चलो अरे तमरा आरआई अमीन एग्जाम नोटिफिकेशन आसीगला केरो गोटे मिनिट अरे तमनकर 20 सेप्टेम्बर रु 20 सेप्टेम्बर रु 8 अक्टोबर डेट आसी जाइछि ओके मन रखि था ए डेट भीतर तमरा प्रीलिम एग्जामिनेशन अछि ओके बहुत जल्दी आपण मानको संगे संग सर माने लाइव आसीबे संगे संग तमनको नोटिफिकेशन जीवन चलो फेन्स लास्ट छाड़ी किंतु जीवन सेपटको संगे संगे नोटा कौन करी तम मानकर veins seen in the leaves serve the function of what
Veins seen in the leaves serve the function of what? Photosynthesis, transpiration, storage, or conduction. What will be the right answer? What will be the right answer? तमाने जाओ ना, तमाने जाओ, मु क्लास बंद कर देबी, किछि पाठ पढिबनी। को राइट आंसर कोन हबो को? Veins seen in the leaves serve the function of what? Function of what? Obviously ma'am कौन ना conduction को ही function करिवो। What is photosynthesis? हमें जानी चाहिए, this is the main photosynthesis happens in the mesophyll cells, that means the chloroplast, mesophyll cell of what? Chloroplast, not the vein। कौन vein themselves रे हमर हुए नहीं। बाकी ट्रांसपिरेशन आपण माने जानि सन्दी स्टोमाटा एंड एपिडर्मिस, ये स्टोमाटा रे आपण माने ट्रांसपिरेशन रिलेट करि परिबे। This is chloroplast। रहिला किए ना स्टोरेज तो हबनी छाड़ा, कंडक्शन को पळे आसीबो डायरेक्ट। ओके डायरेक्ट कोठी की ना कंडक्शन को पळे आसीबो, स्टोरेज को हमरा vascular टिश्यू सहित पळे आसीबो हैला। मते को अकॉर्डिंग टू द हिस्टोजेन थ्योरी ऑफ Hansen 1870 in monocotyledons, the root cap is derived from a separate layer of initials called what? Called what? Tell me. रहिला पक्काई मो गोड़ काटलानी। यस एबे को जानी नहीं एटा। अरे 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 इम्पोर्टेंट जानना केमती। ओके so according to the histogen theory of Hansen 1870, the monocotyledons, the root cap is derived from a separate layer of initials called what? Called the कौन calyptrogen। कौन ताको आसी calyptrogen बोली खुआसे। yes yes that is called calyptrogen। okay very good। so calyptrogen is the histogen हमें कहि परिबा, that is what ना initial layer, ताको हमें आउ कोन कहूचे ना this is the initial ना layer, that is initial layer। clear? पूरा हार्ड क्वेश्चन बॉटनी रो एमती ही क्वेश्चन आसे एग्जाम रे टीचिंग रे बुझिला। ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट एटा पूरा सॉफ्ट क्वेश्चन अछि। चलो companion cells of phloem are found in, companion cells of phloem are found where? कोठी companion cells हम पाउछे मते कुह। companion cells of phloem are found in को जिम्नोस्पर्म रे तो बिल्कुल हबनी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। तो कुह कोठी हबो राइट आंसर कोन हबो? राइट आंसर कोन हबो मते कुह। जदि आपण मानकु ना कंपानियन सेल बदल रे सीव सेल पचारि थांता, SIE सीव सीव सेल पचारि थांता, ताहाले राइट आंसर कोन देई थांतो ना जिम्नोस्पर्म। जेहेतु कंपानियन सेल पचारिची राइट आंसर हबो एंजियोस्पर्म। यस यस राइट आंसर हबो हमर कोन ना एंजियोस्पर्म। ओके वेरी गुड। माने पैरेन्काइमा सहित क्लोजली थांती, का सहित पैरेन्काइमा सहित क्लोजली एसोसिएटेड होई की थांती, that is the sieve tube elements ताको हमें कहूछ। नेक्स्ट सो एंजियोफॉर्म्स जानिछो तो माने कोन ना दिस आर द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड तांकर मेन पार्ट्स हमर थाए, द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म बॉडी आर द रूट, स्टेम एंड द लीव्स। नेक्स्ट the only method of reproduction in blue green algae, अच्छा blue green algae और algae कथा कहिला तरे reproduction हमें को थ्रू रे होची राइट आंसर। through what sexual reproduction तो हुए नहीं। ओके तो फिशन भी राइट आंसर कौन हबो? राइट आंसर कौन हबो मते कुआ। बेस्ट आंसर इज वेरी गुड, दैट इज फिशन। That is what fission, bonding happening, sexual reproduction तो बिल्कुल happening, not applicable in the cyanobacteria,
ओके दैट इज द ब्लू ग्रीन algae ता केस रे बिल्कुल होनी बडिंग भी हमरा हबनी बिकॉज सम प्रोकैरियोट shows the budding but in cyanobacteria the principal modes are binary fission fragmentation हमें कहि परिबा hemoglobinia कहि परिबा that is due to the what fission तो फिशन प्रोसेस हमर कोन ना स्टार्टिंग बॉडिंग रो आपण मन देखि परिबे केमिति हुए बाइनरी फिशन फास्ट हमर गोटे सेल तापर ताकू दीटा मायोटिक कंडीशन आपण मन जानि थिबे तापर हमर कोन दीटा डिफरेंट हेई कि पूरा सेल डिवीजन हेई जाय ओके गोटे पेरेंट सेल रु डीएनए रेप्लिकेट हेई डुप्लीकेशन हेई दीटा आइडेंटिकल डॉटर सेल रे कन्वर्ट होई थांती चलो नेक्स्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया द सेल वॉल कंटेन्स सेल्युलोज कौन सेल्युलोज कंटेन करे सेल वॉल राइट आंसर कौन हम मते को व्हाट विल बी द राइट आंसर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया द सेल वॉल कंटेन्स सेल्युलोज कमेंट ऑप्शन को राइट आंसर दियो राइट आंसर दियो very good that is what na acetobacter kono na xylem that is acetobacter xylenum टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आपण माने जानचंती कोकी हेला बासिली हेला जेमती आपण कोन विव्रियोस हेला का अंडर रे जीव हारी हमर बैसिली फैसिली अंडर रे जीव हारी ता अकॉर्डिंग भी ताकू देखो क्वेश्चन तो निहाय तुमको डिफिकल्ट लागिवो बट जो माने ऑप्शंस विषय रे जानिचंती जोडा कि रिलेट हमर बॉटनी करि परिबे से माने ही क्वेश्चन टाको टिके इजीली टैकल करि परिबे देई परिबे एल सेवन तो देई परिबेनी राइट कोन कहउचंदी सर पिला को कोन तो ओएबीएस रा आसीबो आसी जांदो आपण आपण माने कोन पे गाइस क्लास रे सफिशिएंट नंबर जॉइन करना दे मु जानि परनी कोन प्रॉब्लम कोन आपण माने तो पई आमे माने क्लास करछु आपण माने लिंक गाइस शेयर करबा दरकार पिला माने जानिबा दरकार रिगार्डिंग आवर क्लासेस आपण माने जदी क्लास रो लिंक जदी शेयर न करिवे हला आमे माने केते बढ़िया बढ़िया क्लासेस आउरी प्लान करूछु आपण मानकर ओएबीएस पई ओस्टेट पई ओटीईटी पई आपण माने तो सब लिंक शेयर करबा दरकार ना जदि आपण माने लिंक जदि शेयर न करिवे ताले केमिति आमे माने गोटे क्लास को आगु को नबा को जो माने सीबीजेड पे आपण माने प्रिपेयर होउचोदी आपण माने को भितरु विवेक अमित सुजय कुमार बेहरा टाटेंडा टाइप आ भितरे केते जण सीबीजेड पिला अछ मते कहलो विवेक अमित टाटेन आपण को टाटेंडा टाइप से जिम्बाब्वे रो कैप्टन एक्चुअली थिला कोन सब रहि गले ना कोन सिकार मेसेज तो कोन आसुनी से सब स्थिर हेई आपण कथा सुनुचन तने सब एते ओबीडिएंट पिला कोड गले समझते मेसेज किसी कार मते देखा जाउ नै सब काठै गले ना कोन गवर्नमेंट ऑप्शन आई एम नॉट सर अच्छी सर तो आपण माने लिंक गाइस शेयर करंतु हला लिंक समस्त शेयर आरआई क्लास हबो कि आरआई क्लास तो होछि हबो माने केमिति हबो आ कोन गजमजी खोली गिरी आरआई एमती दौडियो ना कोन हारी गली कहि गिरी हां तो आपण माने पिले लिंक शेयर करंतु नियम तुमे हां हां ठीक शेयर कले कोन हबो पिला भी तो आसियो दरकार ना सीबीजेड पई कोई किछि लाभ नै रे आडो साटी आसी तांग एनर्जी डाउन करले आ किछि काम नै it's about interest yes चलो the most popular and outstanding natural system of classification is that what कोटा में कहूचे most popular and outstanding हमें कोटा कहूचे अमित कौन होउची तमरा राइट आंसर कौन हबा नंबर 12 हमें कोटा राइट आंसर कहबा को दैट इज द हचिनसन कौन हबो ना हचिनसन राइट आंसर हबो हचिनसन रे कौन होउची ना दिस इज द ऑफन प्रेजेंटेड इन द मॉडर्न इंडियन एग्जाम टेक्स्ट हमर आसी जाय एटा आउटस्टैंडिंग नेचुरल सिस्टम ऊपर ओके जोथरे हमर कौन एम्फासाइज कहा को करिछि ना एंजियोस्पर्म को एम्फासाइज करिछि क्लियर चलो
तो टोटल आपण माने जानि छथि केमिति हमर प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन हेछि प्लांट किंगडम फर्स्ट देन हमर कोन क्रिप्टोगैमिया देन फेनेरोगैमिया आफ्टर दैट फेनेरोगैमिया को 3 टाइप्स रे डिवाइड करा जाइछि दैट इज कोन डाइकोटिलिडन्स जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलिडन्स क्लियर then amara dicotyledon again 3 types ro that is the polypetally then kono na gamepetally then mono kono chlamydi clear B option next plants which grow on saline soils are जो saline condition ने plants गुड़ा grow करंती ताको हमें कौन कहूचे कुआ ड्राई कंडीशन मरुभूमि रे हेले हमें ताको जेरोफाइट्स कहूचे एक्वाटिक कंडीशंस रे हेले हमें ताको हाइड्रोफाइट्स कहूचे ओके एठी कोन ऑप्शन अछि जेरोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स हालोफाइट्स एंड सक्युलेंट्स कोन हबो मते कुआ राइट आंसर कोन हबो मते कुआ वेरी गुड सलाइन मीन कोन एक्वाटिक को बुझौची सॉल्ट को बुझौची दैट मींस हमें कहिबा कोन जेरोफाइट हे गेले ड्राई हैबिटेट ऊपर पळेबो कोन एरिडिटी ऊपर पळेबो हाइड्रोफाइट्स हेले दैट एक्वाटिक प्लांट्स ग्रोन इन द फ्रेश वाटर और हमें कहि परिबा सलाइन वाटर सो सलाइन कंडीशन कहिला सॉइल कथा पळे आसिला सो हमें कहि परिबा कि दैट इज कोन हाइड्रोफाइट्स अरे यार हाइड्रोफाइट्स कोन मारुची मु देखु सलाइन कंडीशन आसिला हालोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स तीटा एते सिमिलर लागुची so right answer halophytes not hydrophytes yes that is halophytes plant adopt to saline conditions आमे को कहि परिबा ना सालिकोनिया मने पडुची सालिकोनिया हैला मैनग्रोव हमर हेंताळ बन आसी गला सुंदरबन सहित भितरकनिका सहित रिलेट करिवो एसोसिएट करिकि मन रखियो चलो नेक्स्ट को द फर्स्ट स्टेप अरे चल दिया हाँ the first step in conjugation in bacteria is the first step in conjugation in bacteria is achieved by complementary surface molecules the male component of which formed by what a factor male factor cofactor or all of them clear yes that is what कौन cofactor नहीं that is F factor कौन हबो ना F factor हबो F factor जोटा कमे fertility factor कहूचे F for the fertility factor जोटा की कौन plasmid condition को हमें कहूचे F for fertility factor means plasmid okay that is encodes the pilus formation and the surface proteins enabling the donor that means donor किए थाए male ही थाए ना donor always the donor will be the male that is cell to kind of attach to the recipient and initiate okay conjugation initiate हुए next देखो so this is the structure आमर केमिति F cell आसे जदरे कि F is the plasmid then आमर sex aphelos बाकी total structure process टा आपण माने देखि परिबे वेदांग क्लासेस रो ऑलरेडी आपण मानु कहिची ता विषय रे जणेबा दरकार नाही बट आपण माने जानि चंती पीओ रामरो 1000 रे बैच अछि आरआई एआरआई एंड पीओ पई एंड ता सहित महापैक आपण माने जति नेबे 3499 ने नै परिबे एटा 1 इयर्स पई थिला एटा को हमर एक्सटेंड कर दिया हिची 1.5 इयर्स को ओके एंड जदि किछि भी प्रॉब्लम होची परचेज कला बेले बैच देन डू कांटेक्ट टू दिस नंबर एंड हमर उत्कर्ष बैच भी अछि सीजीएल प्रीलिम एंड मेंस बोथ फाइन ओके next in which of these following the entire flower has been called a nectary मतलब in which of the following the entire flower has been called a nectary को मते कोडा हबो ना eupomalia that is the calycanthus that is the magnolia that is all of the above what will be the right answer universal answer जोठी all of the above अछि कोन त माने चूज करिवो all of the above अछि चूज कोटा करिवो को है मते महापैक गिफ्ट करिवे
स्पेशल डिस्काउंट दियंतु नाइट क्लास पिला में मैम पूरा तुम मान बैच नहीं जी आ नाइट क्लास पिला तो मोर नहीं या हो विवेक तमे बुझी पारछ मो मन कथा तमे ही बुझी पारछ मो मन कथा किसी एक्स्ट्रा डिटेल कहवा को मन होनी बिकॉज पिला ही नांती छाड़ हुआ राइट आंसर दियो 15 नंबर 15 कोडा हबो 15 कौन हबो ना डायरेक्ट ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर मारियो का को ना ऑल ऑफ द एबव चलो litmus an important and widely used dye in chemical industries as an acid base indicator is obtained from what options देखो that is the lacquerora ejaculata that is the cladonia the ransiferinia that is the rochella कौन अच्छे the monteni or the ceteria islandica what will be the right answer now रे भारी खुशी लागतो तुमको पढ़ी ना चलो राइट आंसर नंबर 16 राइट आंसर दियो कौन हबो yes very good that is the rochella कौन montenia family different अच्छी that is the montesian family रो आसीबो हला कोन पिला थिले सेना टिके डिटेल रे कहबी को family रो आसुची को species रो आसुची हला sexual reproduction in algae that takes place through fusion of two similar size gametes is called फ्यूजन रे दीटा सिमिलर आइडेंटिकल डॉटर सेल ले कन्वर्ट हुअंती ताको हमें कोन कहउची जूस्पोर एंजियोस्पर्म आइसोगैमस और उगामस रो उगंडा मन पड़िया चलो देखो सिमिलर कहिची दीटा सिमिलर कहिची माने आइसोगैमस हबो आइडेंटिकल आई फॉर आइडेंटिकल आई फॉर आइसोगैमस वेरी गुड आइसोगैमेट्स विल बी द राइट आंसर ओके फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स ताको हमें कोन कहउचे ना anisogamous fusion of similar gametes ताको हमें कोन कहउचे ना दैट इज द आइसोगैमस क्लियर सिमिलर साइज हे गले गैमेट्स को हमें कोन कहउचे आइडेंटिकल और मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हेले ताको आइसोगैमस को तो गैमेटिक मेयोसिस कोन रही छथि देखो एटी जाइगोटिक मेयोसिस अछि दिस इज द स्पोरिक मेयोसिस ओके नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू Hutchinson's system in the monocotyledons, the most primitive order is what? Most primitive order हमें कहा को कहिबा मते को विवेक माड़ खाइबा तमे वाह मजाक करोच राइट आंसर yes that is what that is the Alice Matalis what is Alice Matalis guys हंचिंग हमरा कोन आसे देले हचिनसन आसीथिले से अरेंज करिथिले कोन ना एंजियोस्पर्म्स मान कोथिरे ना विथ एन एम्फासाइसिस ऑन द प्रिमिटिव वर्सेस द एडवांस ऑर्डर अकॉर्डिंग से कोन ताकू एम्फासाइज करिथिले ताकू अरेंज करिथिले इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट ना ए जो Alice Matalis दिस इज कॉल्ड इट aquatic monocots but these are the aquatic monocots are placed near the base of monocots and are often cited as the most primitive ones also. तो taxonomy रे already तमन को differentiate कहि देछि total केते जणा आपण कोन starting species रु करी कि kingdom जाय जिबे total हमर सब जते बेले division करिवे total 5 टाइप रो रखिबे 2 टाइप्स रो रहिबा हमर को living things plant and animals टोटाल हम स्टार्टिंग रु कहि छी प्लांट किंगडम रे 3 नंबर क्लास ऑलरेडी दीटा रे आपण मानु कहि छी हां कुह spongy tissues is a serious disorder that is hampering the export of mango variety it is what Alfonso mango variety कथा पळे आसिला Alfonso दसेरी
नीलम लंगरा सबुतिक आंबर भेराइटी मते कुह राइट आंसर कोटा हबो कुह सबु तो गोटे आंबर भेराइटी ना बट वेस्ट कोटा हबो बेस्ट कोटा हबो स्पंजी टिश्यूज दैट मींस द स्पंजी पल्प पळे आसिला जेटा का हमर देखिथिबे कैटरीना कैफ एडवर्टाइजमेंट रे करिकि देखाए पूरा खोली दिए पूरा गोटे माने कोन साइड काटिकी पूरा पीस पीस करिकि तार पल्प पूरा देखाए एते सुंदर रे कटे त माने भी ट्राई करथबो बट कटेनी बाई हुक को काम जते ट्राई करे कटेनी बट से जो टाइप रा मैंगो वेराइटी टा कोन कहूचे ना दैट इज द अल्फांसो मैंगो हाँ हाँ रंग रसिया स्लाइस अरे वाह दैट इज द टाइप कोन ना हमरा कैटरीना कैफ वाला मैंगो को रिलेट करके मन रखिबा अल्फांसो मैंगो कोन अल्फांसो मैंगो को रिलेट करिबा हैला चलो आज तुम मानकर बहुत टिके रेस्पॉन्ड हो जाउछि सेति पे क्वेश्चन जानि जानि कम आनी थी थैंक यू गाइस थैंक यू देखिबा क्वेश्चन कोन जदी माने टीचिंग एग्जामिनेशन को सामना रे न रखिली ताहाले बहुत सारा इजी क्वेश्चन आनी परिबी बट टीचिंग पई जदी यूज रे बहुत इजी हे गले पिला मानकर भी कॉन्फिडेंस लैक हे जीवो ना कि एते इजी क्वेश्चन कोन मैम आसुची सेति पई एते सब वाला नाइट क्लास रे बम बम हाँ नाइट क्लास तो सब बेले बमा बम आउ चलो मैम डू यू बिलीव इन घोस्ट मत बेकार कथा